Hello everyone, this video is for class 12th AI students and we are going to discuss practice questions for first unit, that is capstone project. First question is, which of the following is incorrect? So we have to identify the wrong statement out of these three statements. First statement is, a capstone project is a project where students must research a topic independently to find a deep understanding of the subject matter. So this is a true statement where students research on a topic, they create a deep understanding of subject, and based on that knowledge they implement that knowledge which they have gained on a subject, on a topic, and that project which they have created using all the knowledge is called capstone project. So this is the definition basically, और ये correct definition है. Second statement, it does not give an opportunity for the student to integrate all their knowledge. This is incorrect because this capstone project gives students an opportunity to integrate all their knowledge of the subject matter. Third, students cannot demonstrate their knowledge through a comprehensive project. This is also incorrect. They can demonstrate their knowledge. So second and third are incorrect statements. So option C will be the correct option. Now next is, which of the following is an example of capstone project? First is movie ticket price predictor. This is correct. Human activity recognition using a smartphone data set. This is also correct example. Classifying humans and animals in a photo. This one is also correct. So answer is all of the above. Now third MCQ, at a high level every AI project follow dash steps. So आपने पढ़ा होगा कि it follows 6 steps. There are 6 steps in AI project cycle. Now which of the following is the first stage of AI project? So out of these 6 stages or 6 step, first stage is problem definition. So option A is the correct option here. Now next is, which of the following is the second stage of AI project? So problem definition is the first one and data gathering is the second one. So option B is the correct option here. So you should remember name of all the stages of AI project. Now next is, which is the third stage? Feature definition is the third stage. So option C is the correct option. Next is, which of the following is the fourth stage? AI model construction is the fourth stage. Now next is, which of the following is the fifth stage? अगर आपने learn किया होगा तो आपको पता होगा evaluation and refinement is the fifth stage of AI project. Which of the following is the sixth stage? So deployment is the sixth stage of the AI project cycle. In which stage of AI project we ask this question to ourselves, is there a pattern? So 6 stages में से हम कौन सी stage में ये question पूछते हैं कि is there a pattern in the data given? So first stage में this question is asked, that is problem definition and understanding the problem. Now the 11th question, we have to match these given terms. Which category? First is which category? Category means we have to classify the objects into different category. तो ये classification type की problem होती है. So first जो है वो D से match हो रहा है. Now we will see the options. 1D, A और C में जो है 1 का D है. So we will just check these two options only now. Second B. The second is how much or how many. It is matched with regression. Yes, regression means जो variables है वो एक दूसरे पे कितना depend करते हैं, how much and how many they are dependent on each other. So dependent variable independent variable पे कितना depend करता है, this is regression. Now which group? Third का answer is clustering. So 3 का E, groups are formed in clustering. So in option A, 3 is matched with E. So option A is the correct option. Now 12th question, if there is dash pattern then the problem cannot be solved with AI technology. So options are no, A, some, few. So if there is no pattern, ये आपने पढ़ा ही होगा, अगर कोई pattern नहीं है data में, then we cannot solve the problem with AI. Now next question, dash is a design methodology that provides a solution based approach to solve problems. So if you have read the definitions and concept properly, तो आपको पता चल गया होगा कि इस ऑप्शन में, इन ऑप्शंस में से डिज़ाइन थिंकिंग इज़ द करेक्ट ऑप्शन. Next, dash is extremely useful in tackling complex problems that are ill-defined or
unknown. So here also the correct option is design thinking. It helps us in tackling complex problem because it decomposes the problem into small parts, and there are stages, different stages in design thinking जिसके थ्रू हम प्रॉब्लम को प्रॉपरली अंडरस्टैंड एंड डिफाइन कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ डिज़ाइन थिंकिंग. So you can see that design is not a stage of design thinking. Empathize होता है, define होता है, ideate होता है, then prototype and test are there, but design is not a stage. Next is assertion and reasoning. Break down the problem into smaller units before coding. So this is a correct statement that before coding we should break down the problem into smaller units. Real computational tasks are complicated. Yes, so this is the correct reason कि because real computational tasks जो होते हैं वो बहुत complicated होते हैं, जो real life problems होते हैं they are complicated. That's why we should break down the problems into smaller units before coding. So both A and R are true, and R is the correct explanation of A. So option A is the correct option. Next is dash involves thinking of a series as a combination of level, trend, seasonality and noise component. So if you will see the option, तो इसका आंसर है time series decomposition. Now we have to match the following. First is level. So level is average values in the सीरीज. सो 1 का D, सो विल चेक द ऑप्शन. ऑप्शन A एंड D में जो है 1 का D है. देन सेकेंड ट्रेंड मीन्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वैल्यूज जो भी चेंजेस हो रहे सीरीज में, दैट इज ट्रेंड. सो 2 का A इज हेयर इन ऑप्शन A, तो ऑप्शन A इज द करेक्ट ऑप्शन. Now next is assertion and reason. Decomposition provides a useful abstract model for thinking about time series. So this is a correct statement. It provides better understanding problems during time series analysis and forecasting. So these two are statements which are correct about time series decomposition. But ये इसका explanation नहीं है, दोनों just information. These are the facts about time series decomposition. So here both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. Option B will be the correct answer. Now next question, amplitude height of cycles appear to be increasing, suggesting that it is. So you can see here amplitude of these cycles are इंक्रीजिंग. तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि इट इज़ विच टाइप ऑफ मॉडल, इट इज़ अ मल्टीप्लिकेटिव मॉडल. तो अगर आपने बुक अच्छे से पढ़ी है, CBSE वाली PDF अच्छे से पढ़ी है, तो आपको समझ में आ रहे होंगे ये क्वेश्चंस और इनके आंसर ईजीली आपको मिल रहे होंगे. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रीड द PDF, AI PDF विच इज़ गिवन बाय CBSE, क्योंकि उसमें से इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं. सो दीज आर प्रैक्टिस क्वेश्चन जिससे कि आपको समझ में आए कि किस तरीके के क्वेश्चंस इस चैप्टर से बन सकते हैं. नेक्स्ट इज द बिजनेस स्पॉन्सर्स नीडिंग द एनालिटिक सोल्यूशन प्ले द क्रिटिकल रोल इन dash stage by defining the problem, project objectives, solution requirement from a business perspective. Now let's check the options: business understanding, analytic approach, modeling and data preparation. So business understanding is the correct option here. In business understanding, we define the problem, project objectives and solution requirement from a business perspective, from a business point of view. Now next question, this is a figure given from your book only. तो आपने अगर ये फिगर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जो A ऑप्शन है वो ऑब्जर्व्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी ऑप्शन जो है ट्रेंड को कर रहा है, सी सीजनल एंड डी रेसिडुअल. सो देयर आंसर विल बी ए ऑब्जर्व्ड, बी ट्रेंड, C seasonal and D residual. So option B will be the correct option. So ऐसे ही जो फिगर्स दिए हैं, ग्राफ दिए हैं, इनके बेसिस पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो आपको ये ग्राफ, ये इमेजेस अच्छे से देखनी है. नेक्स्ट, इन फाउंडेशनल मेथडोलॉजी ऑफ data science, believe it or not, even with 9 stages still to go, first stage is the hardest. So there are 9 stages जिसमें कि जो first stage है that is the hardest one. So what is the first stage in the 9 stages of foundational methodology of data science? First is बिजनेस अंडरस्टैंडिंग और इसकी जो सेकेंड स्टेज है वो एनालिटिक अप्रोच है. नाउ नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ फाउंडेशनल मेथडोलॉजी ऑफ डेटा साइंस? सो बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, एनालिटिक अप्रोच, मॉडलिंग, डेटा प्रिपरेशन, दीज ऑल आर द स्टेजेस. सो ये यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग हो गया. लेट्स से कि यहाँ पे हम नन ऑफ द अबव कर लेते हैं. सो नन ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट
option. Now let's see the next one. Every project regardless of its size starts with dash, which lays the foundation for successful resolution of the business problem. Now if you will check the options, then business understanding is the correct option. Next is expressing the problem in the context of statistical and machine learning techniques so that data scientists can identify techniques suitable for achieving the desired outcome. So in which stage of analytic approach this happens, where data scientists identify techniques for finding the desired outcome. So this is analytic approach. Next, once the problem to be addressed is defined, so when the problem is properly defined, appropriate analytic approach for the problem is selected in context of business requirement. This is the second stage, दैट इज़ एनालिटिक अप्रोच. एनालिटिक अप्रोच यहाँ पे यूज़ हो रही है और जो एनालिटिक अप्रोच है वो सेकेंड स्टेज है. फर्स्ट इज बिजनेस अंडरस्टैंडिंग. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एनालिटिक अप्रोच बेस्ड ऑन टाइप ऑफ क्वेश्चन. सो बेस्ड ऑन टाइप ऑफ क्वेश्चन देयर आर डिफरेंट एनालिटिक अप्रोचेस. लेट्स सी द गिवन options here. Descriptive is the correct option, diagnostic is also correct option, predictive, prescriptive, all these are analytical approaches. So यहाँ पे ये option को हम cut करके कर लेते हैं all of the above. So all of the above will be the correct option here. Now next one we have to match the following. Descriptive, it shows the relationship. So one का A is correct. If you will see this option तो इसी में ही है. 2 का B is correct. Diagnostic is also called statistical analysis. Predictive shows the probabilities of an action, and prescriptive shows that how we can solve the problem. So option D is the correct option here. Now next is, if the problem that needs to be resolved is a recipe, so to speak dash is an ingredient. So अगर problem जो हमें solve करनी है वो recipe है, so क्या चीज़ ingredient होगी? Obviously data will be the ingredient. So ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन हियर. इन केस अगर आपने सीबीएसई वाली एआई बुक नहीं पढ़ी है तो आपको ये क्वेश्चन सी एमसीक्यूज डिफ़िकल्ट लग रहे होंगे, आपको आंसर इजीली नहीं समझ में आ रहा होगा. सो इन केस अगर ऐसा हो रहा है, ये केस है कि आपको आंसर्स नहीं समझ में आ रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, देन यू शुड रीड दैट पीडीएफ वंस और उसके बाद आप इन्हें सॉल्व करिएगा. आई विल प्रोवाइड दिस पीडीएफ ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. इसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा. आपको खुद से सॉल्व करना है और उसके बाद आप आंसर्स मैच कर सकते हैं थ्रू दिस वीडियो. Now next question, techniques like descriptive statistics and visualization can be applied to data set after original data gathering. So here we have collected data and now we are analyzing the content of the data. To close the gap, additional data collecting may be required. Identify stage of this analytic approach. So there are different stages like data requirement, data gathering, data understanding, data preparation. तो यहाँ पे हम data को क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, data को understand कर रहे हैं. So data understanding is the correct option. Next question, in which stage of analytic approach decisions are to be made as to whether or not the collection requires more or less data. So हम किस stage में देखते हैं कि हमें data और चाहिए या we can work with less data. So that stage is called data collection. Now next question, a dash model tries to yield yes or no, stop or go type of outcomes. So predictive model tries to give answers in yes or no or stop or go type of answers. Now next is dash are based on analytic approach that was taken either statistically driven or machine learning driven. So now the options are predictive, descriptive, both A and B, none of the above. So option A is the correct option here. Next, dash model might examine things like if a person did this, then they are likely to prefer that. So based on the past records, based on the historical records, when we give the results, that is called descriptive model. Now the next question, in which of the following stage data scientists will play around with different algorithms to ensure that the variables in play are actually required. So whether variables are required or not, this is determined in data modeling. You want to predict future house prices. The price is a continuous value. It means any value can be taken for house price. Therefore, we want to do regression. Which loss function can be used here? So answer will be MSE. As it is example is taken from the book. So यहाँ पे MSE loss function is used for predicting future house prices.
Next is all the algorithms in machine learning rely on minimizing or maximizing a function which is also called, so answer will be objective function. Now the next question, the group of functions that are minimized are called लॉस फंक्शन. सो ये सारी डेफिनेशन तो आपने लर्न की होगी क्योंकि इनसे जो है आपके 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion and reason based question. Think of loss function like undulating mountain and gradient descent is like a sliding down mountain to reach the bottommost point. So this is the correct point. A loss function is a measure of how good a prediction model does in terms of being able to predict the expected outcome, and gradient descent is a method of finding the minimum point of function. So gradient जो डिसेंट है वो क्या है, मिनिमम पॉइंट फाइंड करता है, इसीलिए हम ग्रेडियंट डिसेंट को क्या बोल रहे हैं, स्लाइडिंग डाउन द माउंटेन टू रीच द बॉटम मोस्ट पॉइंट. और लॉस फंक्शन क्या है, हाउ गुड अ प्रोडिक्शन मॉडल इन बीइंग टू एबल टू प्रोडिक्ट expected outcome, इसीलिए हम इसे बोल रहे हैं undulating mountain. So this reason is the correct for this assertion. तो यहाँ पे जो आंसर है वो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन. सो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो अच्छे से आपको अपनी जो ये यूनिट है पीडीएफ से अच्छे से पढ़नी है. In this scattered graph, which of the following represents the actual values? इस ग्राफ से पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस, मतलब लास्ट टाइम भी आया था, उससे पहले वाले टाइम पे भी आया था, तो इस ग्राफ से क्वेश्चंस बनते हैं. तो इस ग्राफ को आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, इस स्कैटर्ड ग्राफ को. सो एक्चुअल वैल्यूज़ क्या कौन रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे जो रेड डॉट्स है दे आर रिप्रेजेंटिंग एक्चुअल वैल्यूज़. इन द सेम ग्राफ विच ऑफ द फॉलोइंग represents predicted values, जो ये blue line है this is presenting predicted values. In this scattered graph which of the following represents the error, तो error जो है this is the error, ये जो distance between predicted value and actual value है, ये जो लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एरर. और यहाँ पे ये x से ये डिस्टेंस को शो किया है, सो x विल बी द करेक्ट option here. Next, in which procedure we run our modeling process on different subsets of the data to get multiple measures of model quality. So here answer will be cross validation, क्योंकि हम क्या करते हैं different subsets लेते हैं same data में different subsets of training and test data और हम उसी को try करते हैं for examining model quality. So cross validation is the correct option here. Which of the following is not a common split percentage? So 80-20 is the correct one, 67-33 भी correct है, 50-50 भी correct है. So option D is the wrong one. So that's why option D is the correct option. Next question, you must choose a split percentage of training and test data that meets your project objectives with these considerations. So let's see what are the options. Computational cost in training model, computational cost in evaluating model, so this we should consider. ट्रेनिंग टेस्ट रिप्रेजेंटेटिवनेस, ये भी हमें कंसीडर करना होता है. इवन टेस्ट सेट रिप्रेजेंटेटिवनेस ऑल्सो वी कंसीडर. सो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट option. Now the next one, if your data set is smaller then we should use cross validation, and if the data is larger data set then we should use train test split. So option A will be the correct one. What does the line test size equals to 0.2 suggest in the given code? So even now the question can be asked from the code also कि test size equals to 0.2 क्या है. It means your test data है that should be 20% of the data set and rest should be train data. So option A will be the correct option. Now next is, why do we import pandas for train and test data? So we have used two libraries. One is import pandas. Pandas is also a library, and sklearn. So जो pandas library हमने use की है that is for importing data set, और जो sklearn होती है दैट इज़ यूज फॉर स्प्लिटिंग डेटा सेट. सो इट मे हैपन कि इस बार जो एग्ज़ाम हो उसमें से कुछ MCQs जो है आपको कोड से भी देखने को मिल सकते हैं. लास्ट टाइम तक कोड से कोई जो भी कोड है प्रोग्रामिंग पाइथन के जो कोड्स हैं उससे कोई क्वेश्चन नहीं आए थे, बट लास्ट टाइम जो है ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस आए थे. तो हो सकता है इस बार जो है थोड़े बहुत MCQs जो हैं आपके वो प्रोग्रामिंग पार्ट से भी हों. सो यू हैव टू रीड ऑल द प्रोग्रामिंग पार्ट और उनसे रिलेटेड जो भी एक्सप्लेनेशन है.
Now the last question with the output of dash functions, you can see that we have 104 in the test data and 413 in the ट्रेनिंग डेटा. सो यहाँ पे एक्चुअली ये फंक्शन नहीं है, दिस शुड बी द शेप एट्रीब्यूट. इसका आंसर होगा शेप एट्रीब्यूट्स. सो किस वजह से जो है हम आउटपुट में 104 रोज़ डेटा सेट में और टेस्ट डेटा में और 413 ट्रेनिंग डेटा में फाइंड कर सकते हैं यूजिंग शेप एट्रीब्यूट. सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन हेयर. सो दिस मच फॉर दिस वीडियो. आई होप ये MCQs आपको फर्स्ट यूनिट रिवाइज करने में हेल्प करेंगे. अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा और मोर वीडियोस कमेंट करिएगा फॉर द MCQs ऑफ सेकेंड यूनिट. Thank you for watching this video and all the best for your examination.